I'm very fond of doing what I do, as I like to call it, and every breathing moment is about films. So I think it is your hard work, dedication, and the fact that you enjoy doing your work very much that gets you where it does. I'm not into genres. If you notice, I'm into playing different characters. एंड मैं अलग अलग किरदार प्ले करने की कोशिश करती हूँ, अलग अलग टाइप की फिल्में करने की कोशिश करती हूँ. माई रीज़न फॉर डूइंग द फिल्म वॉज इट्स अ पावरफुल स्टोरी एंड मुझे मालूम है संजय इसको अलग बनाएंगे. बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल है मेरा. इंटरेस्टिंग फॉर मी क्योंकि एक बीवी का टर्मोइल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है व्हेन यू नो यू आर प्लेइंग एन असैसिन्स वाइफ. एंड हमेशा हमारा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट यही रहता है कि मैं उनको बोलती हूँ ये काम छोड़ दो, मैं अपने बच्चे या मैं अपने फ्यूचर में ये नहीं चाहती हूँ, एंड कैसे कहानी वहाँ से प्रोग्रेस करती हूँ. मैं अपनी हर फिल्म में एक अलग किरदार निभाना चाहूँगी. मैंने अपनी हर फिल्म में अलग अलग तरह की प्रियंका प्रेजेंट करने की कोशिश की है. वेदर इट वॉज मुझसे शादी, वेदर इट वॉज ऐतराज़, वेदर इट वॉज अंदाज, और वेदर इट इज़ करम. सब में अलग अलग कैरेक्टर प्ले किया है मैंने. एंड आई डोंट वांट पीपल टू आइडेंटिफाई माई फेस विद जस्ट वन कैरेक्टर. I want to look different in most my characters. So I work a lot for my films because I really enjoy doing what I do. Does not mean taking off your clothes. You can look glamorous by looking beautiful and wearing beautiful clothes, but that doesn't mean you have to take them off. I think that's a very ridiculous funda that today's filmmakers have come up with, that films only sell because of, you know, exposure, which I think is not required at all. It is very different from what I did in Aitraz. Barsat is a small town Indian girl from Shimla, which is very different, but she's still glamorous. Then Yaqeen is a housewife. Waqt I play a housewife. So I mean I play different characters in all my films. You can't get slotted. That's what I hate. I want to break through that.